स्पीच ही की तरफ मैं एक तलबा को दावत देता हूँ। वो आएंगी और इंग्लिश में तालीम के ऊपर एक स्पीच पेश करेंगी। इस शेर के साथ मैं शायदा नबी को बैस पे बुलाने जा रहा हूँ। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कदम चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए, और कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं, जिंदगी तो सब जीते हैं, अगर जीनी है तो ऐसे जियो जैसे मिसाल बन जाए। आप सुनने जा रहे हैं शायदा नबी बैस। Respected guests, teachers and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shaikha Nafi from Qurani Hayati Senior Group. I would like to share my thoughts on the importance of education in our life. In today's time, education is most important for us. We can't do anything good in our life if we are not educated. We can't achieve our goal without education. We know that education is the precious gift of Allah. Only education is the tool that helps us to removing our doubts and fears about all the challenges in our life. Education is not about to gain only knowledge, but it means learning a way to be happy, to keep others happy, to learn how to live in society, how to help others, and how to behave with others. My dear friends, education is like a healthy food, which nourishes us both internally and gives lots of confidence by making our personality and increasing our knowledge. Good education is only the way to remove bad habits, poverty, inequality, and so many social issues. Education teaches us to be polite. When we are educated, we know when to speak and how much to speak and when to remain silent. My dear friends, at last I want to say you that the best education is possible when we are taught from the best education center and teachers. I also want to remind you that we all are so much lucky that the best education center is located in our Jamuria Bazaar with the name of Maktab-e-Hassaniya. I want to draw your attention that our teacher Hafiz Umar Farooq, who is the principal of Maktab-e-Hassaniya, he teaches us the Holy Quran, Hadith, Sunnah, Dua, Diniyat, Urdu, etc. And he also teaches us for how to make a good society in our area. He has always been a hard work teacher for us and always guide us for good habits, respect to elders, especially parents, and love to youngers. तलबा हैं जो अपनी सलाहियत रखते हैं अलग अलग अंदाज में, उसी सलाहियत का मुजाहरा करने के लिए मैं बंगला स्पीच के लिए नरगिस खातून को माइक पे बुला रहा हूं कि वह आए और बंगला में अपना स्पीच पेश करें। नरगिस खातून। আসসালামু আলাইকুম। 1947 সালে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীরা 1947 সালে ভারতবর্ষে ছিল না কোনো স্বাধীনতা। তখন ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজদের রাজত্ব। দীর্ঘদিন ইংরেজদের অধীনে থাকার পর এই শুভ দিনটিতে ইংরেজদের পতাকা সরিয়ে ভারত মৃত্তিকার মাটিতে উঠেছিল পবিত্র গেরুয়া, সাদা ও সবুজের চিরঞ্জিত পতাকা। সেই দিনটি হলো 1947 সালের 15ই আগস্ট। কত শহীদের রক্তের বিনিময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। সেই দিনটির গুরুত্বকে মনে রেখে সেই দিনটি পালন করা আমাদের একান্ত কাম্য। আমরা এই দিনটি আনন্দের সঙ্গে কাটাই। প্রতি বছর যথা স্থান স্কুল, কলেজ, অফিস আরো অন্যান্য ক্লাবে সবাই পালন করি। আসসালামু আলাইকুম। माशाअल्लाह, ये थी नरगिस खातून जो बंगला में आज़ादी हिंद की तारीफ पेश कर रही थी। चूँकि हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, हमारा हक है कि हमें बंगला ज़बान से वाक़ियत होनी चाहिए।